Okay, so the remaining topic from how much fruit. There are only 2 questions left on page number 42 for this topic, and the next topic we are going to learn is comparing measures. Okay, first we will complete the remaining portion of how much fruit topic, and then we will do our next topic, comparing measures. Moving towards the next slide, on page number 42, this is given your question. Now don't see your book, just see my presentation and have a concept. Round the weight of each bag to the nearest kilograms. First, revise in just 2 minutes the rules for conversions. The rule for conversions we read yesterday. When we move from a smaller unit to a bigger unit, we divide. And when we move from the smaller unit, from the bigger unit to the smaller unit, we multiply. Okay, we will use the same concept today in the lecture as well. First, see this one, round the weight of each bag to the nearest kilogram. The first question is round 1.750 to the nearest kilograms. Okay, this is given on the weight scale 1.7 kgs. Okay, I have made a question for you to round this question to the nearest kilogram. So what are the rules to round the number? This is a decimal number. A decimal number is a number which has a point with it. ठीक है, अब आप देखो after the point what is the number? This is 7. ठीक है, this is 7. When we have a number greater than 5, ठीक है, जब हमारे पास नंबर 5 से ग्रेटर आ जाता है तो ये जो पीछे नंबर होता है we add 1 into it. ठीक है, अगर पॉइंट के बाद हमारे पास जो वैल्यू है इफ इट इज ग्रेटर देन 5 वी एड 1 इन द प्रीवियस नंबर. तो ये हमारे पास क्या है 750. ठीक है, 7 भी बड़ा है, हमारे पास ये बड़ा डिजिट है 5 से, तो व्हाट वी वुड डू, हम क्या करेंगे इस 1 के अंदर एक और 1 ऐड कर देंगे एंड वी हैव 2 kgs एज द नियरेस्ट किलोग्राम फॉर दिस नंबर. ठीक है, फॉर दिस kgs. नेक्स्ट वी हैव इज see the diagram. Here we have 80 and 90. Just see where the needle is situated, where the needle is located. अब आप देखो 1, अब आपने इसको काउंट करना है. It's 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 and 89. The needle is on 89. So I have made a question for you. Write around 89 kgs to the nearest kilogram. Now what are the rules to round the numbers? Whole numbers. ठीक है, ये तो हमारे पास decimal numbers थे. Whole numbers में हम क्या करते हैं जिसमें points नहीं है. If the number like this, ये आप देख रहे हैं 9, हम अगर 80 से start करें 80, 81, 82, 83, 84 and 84, यहाँ तक अगर हमारे पास नंबर होंगे तो हम इसको 0 पे राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है, अगर 84 तक होता तो हम इसको 80 पे राउंड ऑफ कर देते. लेकिन अगर हमारे पास इफ इट्स 85, 86, 87, 88 और 89, देन व्हाट वी वुड डू, हम इसको टेंस पे राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है, यानी कि हमने इसको 89 को टेंस पे यानी कि 90 पे राउंड ऑफ किया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट पे हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया एंड दिस इज वी हैव 90 kgs. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. जब पॉइंट के बाद हमारे पास 5 से ग्रेटर डिजिट हो जाता है तो हम पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं. दिस इज द राउंडिंग इन द केस ऑफ डेसिमल. इन द केस ऑफ होल नंबर, अगर हमारे पास 0 से 4 तक डिजिट्स हैं तो हम उसको 0 पे राउंड ऑफ करते हैं. 5 से 9 तक डिजिट्स हैं तो हम उसको टेंस पे राउंड ऑफ करते हैं. Okay, so now it's on page number 43 of your books. Farmer Joy plants some young fruits. Write the height of each tree. ठीक है, the height of tree is not given to us as I have written it for you, 95, 67 and 120. Here it has just marked it. ठीक है, इसके इधर यहाँ पे सिर्फ मार्क हुआ है ये नंबर, आपने खुद देखना ये क्या नंबर है. सो ये 90 और 100 के बिटवीन में 95 लाइन है जो कि उसने हमें कहा है कि ये 95 मीटर्स हैं. जस्ट कन्वर्ट इट इनटू
centimeters and millimeters as well. For the second tree, this line is marked on the number 67. This line is marked on the number 67. ठीक है, तो आपने 67 को भी क्या करना है? You have to write it in meters, centimeters and millimeters. In tree C, here you can see 120. The line is marked on 120. ठीक है, तो 120 पे आप क्या करोगे? आपने बता, you have to write 120 in meters, centimeters and millimeters as well. So let's begin. As I told you in the starting of the lecture, just do remember the conversion rules. From smaller to bigger, divide. From bigger to smaller, multiply. ठीक है? Okay, now in meters, you just write 95 meters. It's already in meters, so you will write in meters, it's 95 meters. This is the notation for meters, a small m. Now in centimeters, अब आपने इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने से पहले यू हैव टू थिंक फॉर अ वाइल कि जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो छोटा है या फिर ये वाला छोटा नंबर है, या जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो छोटा है, या कौन सा बड़ा है. ठीक है, तो आपको किस तरह पता चलेगा? जस्ट राइट द रिलेशन फॉर दोज टू कन्वर्जन डिजिट्स. ठीक है, अब आपके पास मीटर है गिवन ऑलरेडी, आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन अराइजेस कि मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है. तो यू हैव टू लर्न दिस कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. आई एम अगेन रिपीटिंग इट फॉर यू. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. इट मीन्स जब 100 सेंटीमीटर्स कंबाइन होते हैं दे मेक 1 मीटर. So it means meter is a bigger unit and centimeter is a smaller unit. Meter is a bigger unit and centimeter is a smaller unit. Meter is a bigger unit and centimeter is a smaller unit. ठीक है, अब जब हमने स्मॉलर यूनिट में जाना है इन सेंटीमीटर, व्हाट वी वुड डू, हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 9500 we have 95 and we have multiplied it with 100, so it's 9500 and centimeters. ठीक है, it's 9500 centimeters. Now next is millimeters. Now you have to convert, you have to write in millimeter as well. ठीक है, meters में आपको given था, अब आपने millimeters में लिखना है. So you must know the relation between meters and millimeters. ठीक है, so 1 meter is equals to 1000 millimeters. It means when 1000 millimeters add up, they make 1 meter. When 1000 millimeter add up, they make 1 meter. So what does it mean? It means that meter is a bigger unit and millimeter is a smaller unit. अब हम क्या कर रहे हैं? बड़ी यूनिट थी हमारे पास मीटर, उससे हम जा रहे हैं छोटी यूनिट में which is millimeter. So when we move from a bigger unit to a smaller unit, we multiply. ठीक है, so हम क्या करेंगे? 95 को 1000 से when we will multiply, we will have 95,000 millimeters. 95,000 millimeters. Again, just have a quick review. We are given the heights in meter. ठीक है, we are just given a line, marked line. We have to write the length in height in meter, centimeter and millimeter. Okay, in meter it's already given. We have just written 95 meters. In centimeter, you have to memorize that 1 meter is equals to 100 centimeter. We are moving from a bigger unit to a smaller unit, so we will multiply with what? With this 100. Okay, so 95 into 100 is 9500. Next we have to write the same number in millimeters. So 1 meter is equals to 1000 millimeters. It means meter is a bigger unit and millimeter is a smaller unit, right? So when we move from a bigger unit to a smaller unit, we will multiply with this 1000. So 95 into 1000 is 95,000 millimeters. I hope this is clear to everyone. Moving towards the next slide.
Now next one, the question was this 67. Now we will write it in meters, centimeter and millimeter in a same way. How we will write in meters? 67 meters, simple. How we will write it in centimeters? First we will write the relation 1 meter is equals to 100 centimeters. Moving from the bigger to a smaller unit, multiply 100 with this 67 and we have 6700 centimeters. We have 6700 centimeters. Next we have to convert in millimeter. Again the same rule, 1 meter is equals to 100 millimeters. Millimeter is a smaller unit and meter is a bigger unit. So we will multiply 67 with this 1000. So we have 67,000 millimeters. So in this way we have written in meters, centimeter and millimeters. Here you can see we have to do the same work with this 120 as well. Write it in meters, centimeters and millimeter as well. So this is homework for you. 120, you have to do it by yourself. First write it in meter, centimeter and millimeter and write the proper answer like this. Okay? Don't write just 6700, 67,000 and 67. Just write proper conversion like this. The relation between meter and centimeter, the relation between meter and millimeter, in a proper way you have to do 120 by yourself. Okay, so next we have another topic, comparing measures. Our next topic of discussion is comparing measures. Copy and complete. Write less than or greater than between the numbers to make them equal. To make them equally true. This is hidden behind this picture. This is to make them equivalently true. ठीक है, हमने स्मॉलर का या ग्रेटर का साइन लगाना है और जो हमारे पास नंबर लिखे हैं हमने उसको ट्रू प्रूफ करना है. ठीक है. सो एज वी ऑलरेडी नो, जो नंबर ग्रेटर होता है ये वाला साइन उसकी तरफ ओपन होता है. ठीक है. दिस वी साइन इज ओपन where the number is greater and this sign is closer where the number is smaller. So is 400 greater or 200 greater? Obviously 400 is greater than 200. So we have put this sign. It means the open side towards 400. Right? Now this is true statement. This inequality is now true. Okay, next we have 300 and 100. So, is 300 greater or 100 greater? 300 is greater. So, we have put a sign where this is open towards 300. Next, we have 300 and 400. So, 400 is greater than 300. So, we have put a sign open towards 400. Next, we have 250 and 750. So, 750 is a greater number. So, an open sign towards 750. Next, we have 600 and 700. 700 is greater. So, an open sign towards 700. Next, we have 600 and 200. 600 is greater. So, an open sign towards 600. But students, the question is not कि आपने सिर्फ जो ग्रेटर नंबर है उसको तरफ आपने ये साइन बनाना है. क्वेश्चन इज कि आप इधर ये ओपन साइन बनाएं या ये क्लोज साइन बनाएं बिटवीन द नंबर्स, बट द इनइक्वालिटी शुड बी ट्रू. अगर जिस तरह से यहाँ पर मैंने 400 की तरफ ये साइन ग्रेटर का लगाया है, अगर मैं ये 400 की जगह लगाया है ना, हम इसको दोनों तरह से रीड कर सकते हैं. दैट 400 इज ग्रेटर देन 200 और हम ये भी पढ़ सकते हैं 200 इज लेस देन 400. सिमिलरली 300 इज ग्रेटर देन 100 एंड 100 इज लेस देन 300. ठीक है.
सिर्फ इसमें हम ग्रेटर नहीं बता रहे, हम इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूफ कर रहे हैं ना, तो हम दोनों एंड से इस चीज को रीड कर सकते हैं दैट 300 इज लेस देन 400 and 400 is greater than 300. 250 is less than 750 and 750 is greater than 250. 600 is less than 700 and 700 is greater than 600. 600 is greater than 200 and 200 is less than 600. Okay, so you should know in both way how we can read it. Next one, copy and complete. Write a number in the box to make the inequality true. ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास जो सेंटर में नंबर हैं, these are the answers. I'm sorry, I have forgotten to highlight them. जो सेंटर में आपके पास these are the three numbers 1 2 3. जो मिडिल नंबर है that is the answer. I have already written it for you. This is the answer, this is the answer, and this is the answer. Okay. So we have the question, copy and complete. Write a number in the box to make the inequality true. Write a number in the box to make the inequality true. आपने अब इस बॉक्स में कोई भी ऐसा नंबर लिखना है कि ये inequality true हो जाए. It means, suppose I have written 40. You can take any number, right? I have written 40. So what does it means? 30 is less than 40. This is true. Also 40 is greater than 30. Moving towards the next part, 40 is less than 50 and 50 is greater than 40. So now this statement is true. I have written 40, which is greater than 30 and less than 50. You can also write 41 to 49, any number, right? So this is up to you. You can change the answer as well, but the inequality should remain true. Moving towards the next one, it's given 70 on one side and 100 on the other side. So you can choose any number which is greater than 70 and which is less than 100. So a lot of numbers and lot of examples we can take, and I have written 90. So let's check, is this true? 90 is less than 70 is less than 90 and 90 is greater than 70. True. Moving towards the next part, 90 is less than 100 and 100 is greater than 90. So it means this equality is also true. You can change the number. I'm repeating it again for you. You can change the number, but the equality should remain true. Then we have 100 on one side and 50 on the other side. Okay. Now you have to write a number here. I have written 80. Okay. So let's read. 100 is greater than 80. True. And 80 is less than 100. True. Moving towards the next part. 80 is greater than 50 and 50 is less than 80. So it means this inequality is also true. Lastly, we have 300 on the left side and 350 on the other side. You can write any number in between. So I have written 330. Let's check. 330 is greater than 300 and 300 is less than 330. Next we have 330 is less than 350 and 350 is greater than 330. Okay, so this inequality is also true. Next we have two more parts, E and F, on page number 45, which I have left for you as a homework. Okay, so this is all, and now see the homework. Page number 43, write the height of tree in meter, centimeter, millimeter of tree C. ठीक है, वो जो हमने ट्री अभी पढ़ा है ना 120, जिसको हमने मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में करना है, वो पेज नंबर 43 पे गिवन है, उसको आपने कंप्लीट करना है. एंड ऑन पेज नंबर 45 ये कॉपी एंड कंप्लीट में जो पार्ट ई एंड एफ है, दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर and how you are going to write it on your copies. Starting from this first slide,
राइट ऑल द वर्क इन योर नीट मैथ्स कॉपी एज इट इज, ठीक है। फिर आपने क्वेश्चंस के हेडिंग देनी है और इसी तरह ये कंप्लीट करना है। उसके बाद सी पार्ट जो होमवर्क है पहले वो कंप्लीट करके देन यू हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग मेजर्स, ठीक है। फिर इसको आपने कंप्लीट करना है और जो आपने ये इक्वालिटी इन इक्वालिटी के साइंस लगाए हैं इसको आपने कलर कर देना है, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर कि ये आपने आंसर्स की लाइन लिखी हुई है। इसी तरह आपने ये 90, 100, 80, 330 इफ यू राइट विश टू राइट दीज आंसर्स और इफ यू विश टू राइट आंसर्स बाय योर ओन, उसको भी आपने कलर कर देना है या फिर अंडरलाइन कर देना है जस्ट टू मेक श्योर दैट दीज आर द आंसर्स, ओके। और ई और एफ पार्ट you have to do it by yourselves. So this is all about today's lecture. Now I'm going to stop sharing my screen and I'm reading your comments now. If you have any difficulty regarding the topic and homework, you may ask.